कमिश्नर नोटिफाई करे क्या पॉपुलेशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स की है, और उसके आधार पर इलेक्शन कमीशन को एम्पावर किया जाएगा कि वो डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑर्डर 2008 में संशोधन करके गोवा में लेजिस्लेटिव असेंबली में शेड्यूल्ड ट्राइब्स को भी रिजर्वेशन का लाभ देने का काम करे, और इसके लिए जो भी रिवाइज पॉपुलेशन फिगर्स होंगे उसको मद्देनजर रखते हुए अनुसंधान कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 170 और 332 के तहत और सेक्शन 8 ऑफ द डिलिमिटेशन एक्ट 2002 के तहत ये डिटरमिन करे कि कितनी सीटों को शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व करना आवश्यक है। तो ये मुझे लगता है कि गोवा की कई वर्षों की डिमांड थी। माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी ने भी इस विषय में सरकार को लगातार पत्र व्यवहार किया है। सरकार का ध्यान इसके तरफ लाया गया है और इसको आज केंद्र सरकार ने स्वीकृत करते हुए नया एक विधेयक पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा और गोवा राज्य के विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व को का पुनः समायोजन विधेयक 2024 को संसद में प्रस्तुत करने का निर्णय मंत्रिमंडल ने लिया। ये 6 प्रमुख निर्णय मैंने आपके समक्ष रखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much for the elaborate briefing, sir. Now it's open for questions. We can begin from the front row. Hello, sir. This is Rishi from Business Line. Sir, now since DA has gone to 50% of basic, for the next revision exercise, would DA be merged with the basic pay, sir? That is a decision that the pay commission takes. Sir, 7th pay commission has already indicated on this, so that's why, sir. For the present, the cabinet has decided the increase of 4%, and since the increase has gone up to 50%, the consequential increase in HRA, which will now increase from 9 to 10%, from 18 to 20%, and 27% to 30%. Similarly, gratuity upper ceiling will increase to 25 lakhs, and all the other benefits that were being received, they will all go up by 25%. So those will be the consequential changes of this increase in 4%. Next, CNBC, Lakshman Roy. सर मैं लक्ष्मण CNBC से 2 छोटे छोटे सवाल हैं। एक तो जो उन्नति स्कीम को मंजूरी दी गई है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में पहले से इंडस्ट्री को इंसेंटिव देने की कुछ योजनाएं चल रही हैं, क्रेडिट इंसेंटिव वगैरह होता है, तो क्या उससे अलग होगा या फिर वही है, उससे उसको इसमें शामिल किया जाएगा? मतलब एक इंडस्ट्री क्या दोनों स्कीम का बेनिफिट ले सकती है क्या? दूसरा, इंडिया AI मिशन के तहत AI कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर 10,000 से ज़्यादा बनाने का प्लान है। इसमें जो कहा गया है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे होगा, तो इसमें क्या प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज किया जाएगा ताकि वो इसमें आए, ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लें? उन्नति स्कीम 2024 पूरी तरीके से नए स्वरूप में बनाई गई है और एक इंडस्ट्री को जो पहले बेनिफिट ले चुकी है उसको नई स्कीम के अंतर्गत बेनिफिट लेने की परवानगी नहीं होगी। जो पुरानी स्कीम के लाभार्थी हैं वो पुरानी स्कीम के हिसाब से लाभ लेंगे। इस नई स्कीम में कुछ नए पहलू जोड़े गए हैं जिससे जो भी हमारे अनुभव रहे उस अनुभव को ध्यान में रखते हुए ये कोशिश की गई है कि ज़्यादा इसका प्रभाव क्षेत्र पूरे उत्तर पूर्व में, पूर्वांचल में, सभी राज्यों में देखने को मिले, सभी को इसका लाभ मिल सके। इसमें सेवा क्षेत्र को बड़े रूप में जोड़ा गया है और पहले जो पाया गया था खासतौर पे 2007 की स्कीम में कि कुछ ही क्षेत्र इसको कॉर्नर कर लेते थे या पूरे लाभ को कुछ ही कम क्षेत्रों में ही जाता था, या कुछ कंपनियां निवेश कम करते हुए बड़े पैमाने पर लाभ ले लेती थी। इन सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पूरे क्षेत्र में लाभ को 60% स्कीम को एक
बहुत ही इलेबोरेट मैट्रिक्स के नाते पॉपुलेशन को देखते हुए, उसका डेवलपमेंट कितना हो चुका है उसको देखते हुए, अलग अलग पहलू को रखते हुए एक मैट्रिक्स नीति आयोग ने बनाया, जिसमें पॉपुलेशन भी देखी, स्टेट का एरिया देखा, उसकी स्टेट की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट देखी, फॉरेस्ट कवर देखा, अवेलेबिलिटी ऑफ पावर देखी गई, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रूरल और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट कितना होता है, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक मैट्रिक्स बनाया और उस मैट्रिक्स के तहत सभी 8 राज्यों में 60% को डिवाइड किया गया। जहाँ तक एआई मिशन की बात है, उसमें अवश्य प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की पार्टनरशिप को प्रोत्साहित किया जाएगा। एआई एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमारा निजी क्षेत्र ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है, तेज गति से विकास कर रहा है और विश्व पटल पे आज हमारे जो युवा युवती हैं, उनकी जो टैलेंट है, उनकी जो क्षमताएं हैं, उसको बहुत अहमियत मिल रही है। और मेरा विश्वास है कि ये जो आज भारत एआई मिशन को स्वीकृति दी है, इससे एक बहुत बड़ा छलांग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में भारत भी करने जाएगा, विशेषकर रिसर्च और इनोवेशन के लिए, विशेषकर स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए और कंप्यूट कैपेसिटी जिसका अभाव है आज भारत में, उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जब जीपीयूज 10,000 से अधिक जीपीयूज भारत में लाए जाएंगे, वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, तो उसका भी एक बड़ा अहम भूमिका रहेगी इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने की। Yeah, sir, Prakash Pedashi from ET Now. My question is on AI mission, for which the cabinet has approved 10,000 crore rupees. Sorry? AI mission. AI mission. The question is, sir, how this amount will be spent? Other than the public-private partnerships, will it be spent in a way like interest subvention scheme or some waiver? So how these amount are going to be spent? Today the Union Cabinet has approved the AI mission and the capital outlay. We'll be coming out with scheme guidelines and notifying the selection process. It will be completely competition based with equal opportunity for everybody to participate. We will be encouraging the research and innovation institutes to play an important role. Our startups will play an important role in the proliferation of AI across the nation. And overall, the effort is to make sure that we can democratize the spread of artificial intelligence. More and more stakeholders can get the benefit of the AI mission. Therefore, 7 different areas in which the government will be participating have been drawn up. And in those 7 areas, we will be having guidelines how the AI compute capacity beneficiaries will be selected in a competition mode, where the AI innovation centers will come up based on the demand, how the data sets platform will be created so that voluntarily and with the involvement of private companies also and stakeholders in different areas, we can encourage the deep tech mission in India. AI future skill development will be taken up through undergrad, grad and postgrad programs in reputed universities by supporting access to AI courses. All of these are based on transparent mechanisms to strengthen a safe and trusted AI framework. Next question, Z Business. Point. सर तरुण शर्मा फ्रॉम जी बिजनेस। सर मेरा सवाल भी एआई मिशन को लेकर है। सर ये जो 10,000 करोड़ है, ये बजट के अंदर जो 1 लाख करोड़ का जो फंड बनाने की घोषणा की थी, क्या उसी का पार्ट है? और दूसरा सर, इससे कोई एक असेसमेंट किया है कि कितना जॉब क्रिएशन ये एआई मिशन के थ्रू हो सकता है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय समय पे ये बात बताई है कि इनोवेशन, रिसर्च, डेवलपमेंट, नए शोध को भारत सरकार बड़े पैमाने पे प्रोत्साहन देना चाहती है। उसी के अंतर्गत हम अलग अलग
इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मिशंस देश में लेके आए हैं। अभी भी आप देखें तो टेक्निकल टेक्सटाइल्स का एक मिशन चल रहा है। अभी भी आप देखें तो बायोटेक डिपार्टमेंट बायरैक अलग अलग मिशन चला रहे हैं। ऐसे ही बजट में 1 लाख करोड़ रुपए के एक इनोवेशन फंड का माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में माननीय वित्त मंत्री जी ने अनाउंस किया था। उसकी गाइडलाइंस अब तैयार हो रही हैं और बाहर पेश करी जाएंगी। वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में प्रस्तावित है। और ये जो एआई मिशन है, ये एआई मिशन अपने आप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र को और प्रोत्साहन करने के लिए आज 10,372 करोड़ रुपए के साथ 7 पहलू को लेके देश के समक्ष रखा गया। So next question from the right side, PTI. Yeah. Sanjeev. I just wanted to know, you just enumerated about the Unnati scheme for the northeastern sector, envisaging 10,000 crore incentives for promotion of industry in all the 8 northeastern states. You mentioned that the target is to receive applications around 2,180 applications with employment generation opportunities of around 1 lakh or 80,000. What is the envisaged capital that investment that you propose to get from this scheme? Well, very clearly, the Northeast is an area which has, over the last 10 years, received specific focus from the Government of India in a variety of ways, whether it is the implementation of large infrastructure projects, whether it's promoting high-tech industry and hydropower generation projects, special incentives for our MSMEs in the Northeast. We've been, over the last 10 years, focusing on creating single window clearance mechanisms, and we have found very good results in terms of infrastructure development, in terms of our ability to attract investments in the Northeast. And therefore it was decided that we will now have a scheme which will, in the next 10 years, provide an opportunity for new investments to come in the donor region. And then thereafter we'll have an extended period of 8 years when the committed liabilities will be paid out in the form of net GST reimbursement. We have kept a very substantial outlay of nearly 10,000 crores, and the idea is that this entire scheme will help catalyze thousands of crore rupees of investment. It will depend on, we have not kept a limit to the to each of these sectors. It will depend on the type of investment that comes in. Our effort is to promote high-tech or service-related investment where the capex is lower but the job generation is higher. Our effort is to promote tourism, which will also entail a lot of indirect jobs which are not counted in the 1 lakh jobs that have been highlighted in the scheme. Our effort is to also ensure that the MSME sector gets significant benefit. Therefore, if you will observe, we have kept an upper limit of 5 crore in Zone A and 7.5 crore in Zone B with for the capital investment subsidy. The idea being that capital incentive investment should not get cornered only in a few units, and we try and make sure that it is expanded across the region, across the different districts of the region, and more companies can get the benefit of this capital outlay. Our estimation is that this will catalyze investment in excess of 50,000 crores in the next few years, and this will have a significant impact in terms of promoting industrialization, and the net GST payment that will be collected by the northeastern states will also see a significant boost. The larger units will have a cap on the incentives, and therefore the overall outlay will be restricted to about 10,000 crores.
Thank you, Minister Sir. With that, we close this evening's cabinet briefing. Thank you, everybody.